हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज sin theta plus cos theta is equals to 1, then the general value of theta is। सो पता है हमें इस टाइप ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज sin theta plus cos theta is equal to 1। सो हम इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो दिस इज साइन √2 इंटू साइन थीटा बाय √2 प्लस कॉस थीटा बाय √2, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू, ये लिखा हुआ 1 बाय √2 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 और इनफैक्ट कॉस पाई बाय 4, ताकि हम इसको साइन में कन्वर्ट कर ले। सो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4 then plus cos theta into sin pi by 4, this is equal to 1। ठीक है, so this is nothing but ये लिखा हुआ है sin of theta plus pi by 4, this is equal to 1 by √2। now 1 by √2 can be written as sin pi by 4, so this is sin of theta plus pi by 4 is equal to sin pi by 4। Now using the general solution for sin theta equals to sin alpha, हम इसको लिख सकते हैं theta plus pi by 4 is equals to n pi plus minus 1 to the power of n into alpha, which is pi by 4। So finally our answer is theta is equals to n pi plus minus 1 to the power of n into pi by 4 minus pi by 4. This is the answer. Moving on to the next question, question number 2. Question number 2 says the general solution of the equation 2 times of cos 2x equal to 6 cos square x minus 4. So this is 2 times of cos 2x is equal to 6 times of cos square x minus 4. Now we can see that right hand side में cos square x लिखा हुआ है and left hand side में cos 2x. Now cos 2x can be converted into cos square x, तो this will be in the form of a quadratic, तो इसको लिख लेते हैं 2 times of cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1. This is equals to 6 times of cos square x minus 4. So this implies 4 times of cos square x minus 2 is equal to 6 times of cos square x minus 4. So terms को एक साइड करेंगे तो this will be 2 times of cos square x, right? This is equal to 2. So 2 से 2 cancel out, we get cos square x is equals to 1 है right hand side में, 1 को हम लिख सकते हैं cos square of 0. So this implies x is equals to 2n pi. Sorry, not 2n pi, it should be n pi plus minus alpha होता है. So n pi plus minus alpha में what is the value of alpha, which is 0. So x equals to n pi is the answer, where n belongs to integer. Then question number 3. Question number 3 is if sec square theta is equals to 4 by 3. This is very easy, sec square theta equals to 4 by 3. So sec theta है, so we have discussed कि हमें इसको cos में convert कर लेना चाहिए, sin cos या tan. So easy to convert into cos, हम यहाँ से लिख सकते हैं cos square theta is nothing but 3 by 4. Now 3 by 4 can be written as √3 by 2 whole square, और √3 by 2 हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं cos एंगल पे, that is nothing but cos of pi by 6. So cos square pi by 6. So now this is t square theta equals to t square alpha type equation. इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा theta is equals to n pi plus minus pi by 6. This is the answer. Then question number 4. Question number 4 says 4 times of sin theta into cos theta minus 2 is equals to, not minus 2 into cos theta लिखा हुआ है,
minus 2 into cos theta minus 2 root 3 sin theta plus root 3 equal to 0. So the solution set of the equation in the interval 0 to 2 pi. Okay. So in 0 to 2 pi हमें interval निकालना है, solution set निकालना है मतलब. तो how can we solve this? I think we can factorize this क्योंकि first two terms में से we can see we can take 2 cos theta common. So this will be 2 sin theta minus 1, and from the last two terms we can take minus root 3 common. So this is 2 sin theta minus 1 equal to 0. So this is 2 sin theta minus 1 into 2 cos theta minus root 3, that is equal to 0. So this implies that either 2 sin theta minus 1 is equals to 0 or 2 cos theta minus root 3 is equals to 0. So this implies sin theta is equals to 1 by 2 or cos theta is equals to root 3 by 2. Now cos theta equals to root 3 by 2. This is not possible. तो this को reject कर देंगे because this is greater than, no sorry, this is accepted what I am doing. So यहाँ से solution आ जाएगा theta is equals to 1 by 2 के corresponding the angle is pi by 6. So this is n pi plus minus 1 to the power of n into pi by 6, और यहाँ से आ जाएगा theta is equals to 2n pi plus minus pi by 6. In fact, what we are supposed to tell is only the solution set in the interval 0 to 2 pi. Fine. तो हम देख लेंगे किस इंटरवल में साइन एंड कॉस पॉजिटिव होता है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 6. देन सेकंड क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन विल बी पॉजिटिव एंड दैट वैल्यू शुड बी पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6. एंड करस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 बाय 2 का सोल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई minus pi by 6 and that is 11 pi by 6. So this is the answer. Then next question. Question number 5. General solution of the equation cot theta minus tan theta is equal to 2. So this is very easy. इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक दिख रही है हमें बनेगी. So cot को लिख लेते हैं 1 minus tan. So this is 1 upon tan theta minus tan theta is equal to 2. So this will imply 1 minus tan square theta is equal to 2 tan theta. So this gives me tan square theta plus 2 tan theta minus 1 is equal to 0. फाइन. सो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके tan थीटा इनफैक्ट ऐसा करने की जरूरत नहीं, यहीं पे हमें दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर 2 tan थीटा. ठीक है, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल्स टू 1. सो tan ऑफ 2a, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. So this is nothing but tan of 2 theta equal to 1. So this is nothing but equivalent to tan pi by 4. तो यहाँ से solution आ जाएगा 2 theta is equals to n pi plus alpha which is pi by 4. So finally we get theta is equals to n pi by 2 plus pi by 8. This is the answer. Then next question, question number 6. It says the number of solutions of sin x into tan 4x is equals to cos x. So we have sin x multiplied by tan 4x is equals to cos x belonging to 0 to 2 pi. Total number of solutions पूछा हमसे. Fine. So what we can do is हम
tan को sin cos में कन्वर्ट कर सकते हैं. So we would write sin x into tan को लिख लिया हमने sin 4x upon cos 4x. This is equals to cos x. So this implies sin x into sin 4x is equals to cos x into cos 4x. फाइन. नाउ अगर हम सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, मतलब ये, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos x इंटू cos 4x माइनस sin x इंटू sin 4x. दिस इज इक्वल टू 0. सो ये किस फॉर्म में आ गया? cos a cos b माइनस sin a sin b, विच इज नथिंग बट cos ऑफ a प्लस b x प्लस 4x इज 5x इक्वल्स टू 0. एंड इसका सोल्यूशन हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 2n plus 1 into pi by 2, that is odd multiple of pi by 2. Fine. Now हमें निकालना क्या है? We are supposed to find the number of solutions in belonging to 0 to pi. तो पहले इसको लिख लेते हैं x is equals to 2n plus 1 into pi by 10. Now solution 0 से pi के बीच में चाहिए. So let's see. Corresponding to n equal to 0, क्या मिलेगा? x equals to pi by 10. So yes, this belongs to 0 to pi. So this is one value. Then if I substitute n equal to 1, so what do I get? X is equals to 3 pi by 10. This is also a solution. Then n equal to 2 के corresponding I would get x is equals to 5 pi by 10, which is pi by 2. This is also in between 0 to pi. Then n equal to 3 के corresponding 3 to the 6 plus 1 7. So 7 pi by 10. Yes, this also lies and corresponding to n equal to 4. In fact, you can directly see from here कि 2n plus 1 ये 10 से बड़ा ना हो जाए. तो the possible values are 1, 3, 5, 7 and 9. So corresponding to 4, x will be equal to 9 pi by 10. So we can see therefore there are 5 solutions. Therefore 5 solutions. Then next question. Question number 7. If sine square theta minus 2 cos theta plus 1 by 4 is equal to 0, then the general value of theta is. So what we are supposed to find is general value of theta. So we can easily see this कि इसको हम quadratic in cos convert कर सकते हैं, because sin square लिखा हुआ है. This can be written as 1 minus cos square theta minus 2 cos theta plus 1 by 4 is equals to 0. So this implies cos square theta plus 2 cos theta and then minus 5 by 4 equal to 0. तो इसको लिख लेते हैं हम 4 cos square theta plus 8 cos theta minus 5 is equal to 0. So this implies, इसको हम factorize कर सकते हैं. 5 4 is 20, 10 and 2. So I think I'll write the factors directly. एक तो दिख रहा है मुझे 1 by 2. So cos theta 2 cos theta minus 1. एक फैक्टर ये आ जाएगा. नेक्स्ट फैक्टर वुड बी 2 cos theta एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5. दिस इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट 2 cos theta minus 1 इक्वल टू 0 और 2 cos theta plus 5 equal to 0. So I get cos theta equal to 1 by 2 or cos theta equal to minus 5 by 2. Now this is going to be rejected because this is less than minus 1 and cos theta we know lies between minus 1 to 1. So यहाँ से solution क्या आ जाएगा? Theta is equals to 2n pi plus minus pi by 3 because cos pi by 3 is 1 by 2. So this is our answer. Question number 7 then question number 8.
Question number 8 says if x belongs to 0 to pi by 2, then the number of solutions of the equation sine 7x plus sine 4x then plus sine x is equals to 0. So I think better idea would be कि हम इसमें sin c plus sin d का यूज़ कर ले. So to use sin c and d मैं इसका और इसका यूज़ करूँगा because sin c plus sin d फॉर्मूले में we have sin 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So c plus d by 2 and c minus d by 2 तो मल्टीपल ऑफ 2 आएगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. सो इफ यू ट्राई टू क्लब 7x and 4x तो वो 11x by 2 and 3x by 2 क्रिएट होगा. So that is why we are applying sin c plus sin d on this. So this should be sin c plus d by 2, which is 8x by 2 is 4x, and into cos c minus d by 2. 7x minus x is 6x by 2 is 3x plus sin 4x. This is equal to 0. So यहाँ से सबसे पहले मैंने sin 4x को कॉमन ले लिया. Then this is 2 times of cos 3x plus 1 equals to 0. Solution क्या आ गया यहाँ से? We have sin 4x is equals to 0 or cos 3x is equals to minus 1 by 2. So यहाँ से हम लिख सकते 4x is equals to n pi because sin x is 0, sin 4x is 0, और यहाँ से हम लिख सकते 3x is equals to 2n pi plus minus alpha. Now corresponding to minus 1 by 2 we would have an angle from second quadrant, and corresponding to 1 by 2 5 pi by 6, right? Now not 5 pi by 6, it should be 2 pi by 3. So आ जाएगा 2 pi by 3. हमें क्या चाहिए? Number of solutions, and we know that x belongs to 0 to pi by 2. तो यहाँ से x लिख लेते, that is n pi by 4, और यहाँ से आ जाएगा x is equals to 2n pi by 3 plus 2 pi by 9 plus minus in fact. Now let's see for the values of x in the interval 0 to pi by 2. So therefore x is equals to, एक तो आ जाएगा 0, then if I substitute n equal to 1 over here आ जाएगा pi by 4, n equal to 2 substitute करेंगे तो pi by 2. So these three solutions are from this particular x. यहाँ से क्या आएगा? x equals to 0, sorry, n equal to 0 रखेंगे. So again don't get confused, इसको k कर दिया मैंने, so that this n and k is not the same. k equal to 0 रखेंगे तो we would get 2 pi by 9 plus minus, तो minus छोड़ देते, will take plus, so this is 2 pi by 9. then minus हमें नहीं चाहिए because 0 to pi by 2 में चाहिए. then one more we should get corresponding to k equal to 2. ठीक है? so no, in fact k equal to 1 के corresponding आ जाएगा because 3 से multiply करेंगे तो 6 pi minus 2 pi is 4 pi by 9. So 4 pi by 9 is the other value corresponding to, this is coming from here, corresponding to k equal to 1. I think no more solutions are possible. So कितने दिख रहे हैं मुझे? 5. So these are the 5 values of x in the interval 0 to pi by 2. So this is my answer. Then question number 9. Question number 9 says if 2 sin theta plus tan theta is equals to 0, then the general values of theta are. So we have 2 sin theta plus tan theta is equal to 0. Then the general values of theta are. So we can write tan theta as sin theta by cos theta. So this is 2 sin theta plus sin theta by cos theta is equals to 0. So let's take sin theta common. तो यह आ जाएगा sin theta into 2 cos theta plus 1 equal to 0, which implies either sin theta is equals to 0 or cos theta is equals to minus 1 by 2. So from here we get the solution as theta is equals to n pi, or from here we get theta is equals to 2n pi plus minus alpha की value corresponding to minus 1 by 2 second quadrant में, that is 2 pi by 3. So this is the answer.
Question number 10. Cos 2 theta plus 3 cos theta is equals to 0. Then, okay, so let's calculate this. यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2 theta plus 3 cos theta is equal to 0. So we can convert this into a quadratic in cos theta. So if you convert this into a quadratic, तो ये आ जाएगा 2 cos square theta minus 1 is nothing but cos 2 theta plus 3 cos theta is equal to 0. So this is 2 cos square theta plus 3 cos theta minus 1 is equals to 0. Fine. So इस क्वाड्रेटिक के हम रूट्स लिख सकते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला बिकॉज इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. प्लस 3 cos theta, राइट. So cos theta is equals to minus 3 plus minus b square, that is 9 plus minus 4ac. So minus minus plus हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 8 divided by 4. So we get cos theta is equals to minus 3 plus minus root 17 by 4. Okay, now we can see that यहाँ से एक ही solution possible होगा because if I take minus over here, तो minus 3 and minus root 7, that would be something like 7 point something because root 17 is 4 point something. 4 point something plus 3 करेंगे तो 7 point something which is greater than 1. So not possible. So only answer possible from here is minus 3 plus root 17 by 4. So what would be theta equal to then? Theta would be equal to 2n pi plus minus alpha. Now alpha हमें दिख रहा है कि हमें इस पे स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू नहीं पता, so हम इसको लिख लेंगे cos inverse of root 17 minus 3 by 4. This should be the answer. Moving on to the next question, that is question number 11. If root 3 tan 2 theta plus root 3 tan 3 theta plus tan 2 theta tan 3 theta is equals to 1. So root 3 tan 2 theta plus root 3 tan 3 theta plus tan 2 theta into tan 3 theta is equals to 1. Then the general value of theta. तो अगर तुम इसको देखोगे तो वी कैन ऑब्जर्व समथिंग. यहाँ पे लिखा हुआ देखो रूट 3 तो कॉमन ले सकते हैं, तो tan a प्लस बी क्रिएट हो जाएगा, tan a प्लस tan b, और यहाँ पे tan a tan b साथ में लिखा हुआ. तो सबसे पहले रूट 3 कॉमन ले लिया, सो दिस इज tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा. दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा. Now this can be written as tan 2 theta plus tan 3 theta divided by 1 minus tan 2 theta into tan 3 theta, and this is equals to 1 upon root 3. Fine. Now ये लिखा हुआ tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, which is nothing but tan of a plus b. 2 theta plus 3 theta, and 1 by root 3 को हम लिख सकते हैं tan of 30 degree, that is pi by 6. So finally what do we get? General solution लिख सकते हैं 5 theta is equals to n pi plus alpha, which is pi by 6. So theta is equals to n pi by 5 plus pi by 30, and you can check the corresponding answer. I think option B match हो जाएगा. This is the answer. Then question number 12. 12 says the principal solution set of the equation. So principal solution का मतलब मैंने बताया था solution in between 0 to 2 pi. So this is 2 times of cosec is equals to under root of 2 plus 2 sine 2x. So root है, so directly we get the thought of squaring the equation.
तो इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन 2x. फाइन. नाउ नेक्स्ट. सो सबसे पहले यहाँ से 2 2 एंड दिस 2, तो दिस इज 2 cos square x is equals to 1 plus sin 2x. Now this 1 can be shifted to the left hand side, so this is 2 cos square x minus 1 is equals to sin 2x, and that is nothing but cos 2x is equals to sin 2x. So this gives me tan 2x is equal to 1. So tan 2x equals to 1 आ गया, तो we can write this as tan 2x is equals to tan of pi by 4. So general solution लिखेंगे यहाँ से. So we get 2x is equals to n pi plus pi by 4. So x is equals to n pi by 2 plus pi by 8. Now what we want is principal solution set, that is solution in between 0 to 2 pi. Let's see कौन से solution आ जाएंगे. x is equals to n equals to 0 के corresponding pi by 8 and corresponding to n equal to 1. What do we get? Pi by 2 plus pi by 8, so that is 5 pi by 8. So we have, एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं so that we can easily observe the solution. मैंने क्या कर दिया, इसको 8 लिख दिया डिवाइडेड बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. So this is 4n plus 1 n 4n plus 1 into pi. So corresponding to n equal to 0 आ जाएगा pi by 8, then plus, not plus, corresponding to n equal to 1 आ जाएगा 5 pi by 8, then corresponding to n equal to 2 it would be 9 pi by 8. Fine. And corresponding to n equal to 3 it would be 13 pi by 8. So this is 0 1 2 then 3 then 4 करेंगे तो 17 pi by 8 which will be crossing 2 pi. तो ये हमें 4 वैल्यूज दिख रही है. बट इफ यू ऑब्जर्व, अगर हम 5 pi by 8 को देखेंगे या 9 pi by 8 को देखेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. सो अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन को देखेंगे तो दैट इज 2 cos x. So at x equals to 5 pi by 8 and 9 pi by 8 cos will be negative और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड में अंडर रूट है तो इट इज अ पॉजिटिव. तो हमने डिस्कस किया था क्लास में कि इफ वी स्क्वायर द इक्वेशन वी गेट एक्स्ट्रा रूट्स. यहाँ से हमने स्क्वायर किया, सो स्क्वायरिंग जनरेट्स एक्स्ट्रा रूट्स and those extra roots we can see over here. These are extra roots which does not satisfy the original equation. So therefore our value of x will be equal to only pi by 8 and 13 pi by 8. So be careful when you are squaring the equation. This is the answer. Then next question. Question number 13. 13 says tan square theta minus 1 plus root 3 tan theta plus root 3 is equal to 0. Then the general value of theta. Okay. So this is a quadratic, we can directly see. So quadratic ko we can solve. So solving the quadratic we get tan theta is equals to minus b, so that is 1 plus root 3, then plus minus under root of b square 1 plus root 3 का whole square and then minus 4ac which is 4 root 3 divided by 2a which is 2. So this implies tan theta is equals to 1 plus root 3 then plus minus under root of 1 plus root 3 का whole square करेंगे तो 3 plus 1 4, 4 plus 2 root 3, so that is 4 plus 2 root 3 and minus 4 root 3 is minus 2 root 3 divided by 2. So this is tan theta is equals to 1 plus root 3 plus minus, इसको हम लिख सकते हैं 1 minus root 3 का whole square divided by 2. In fact we could have directly solved this, directly factorize कर सकते थे.
there was no need to do so much calculation, डायरेक्ट हो जाता. So this is ये स्क्वायर और अंडर रूट है. So this is 1 plus root 3 plus 1 minus root 3 by 2, or the other solution is 1 plus root 3 minus 1 plus root 3 by 2. So we get tan theta is equal to 1. 1 plus 1 is 2 by 2 is 1. Plus root 3 minus root 3 cancel. यहाँ पे plus 1 minus cancel. So this is only 2 root 3 by 2, that is only root 3. So theta is equals to either n pi plus pi by 4 or theta is equals to n pi plus pi by 3. So this is the answer. Then next question. Question number 14. Question number 14 says, find the number of roots of the equation tan x plus sec x is equal to 2 times of cos x in the interval 0 to 2 pi. So we can convert this into sin and cos. तो इसको लिख सकते हैं sin x plus 1 upon cos x is equal to 2 cos x, and then we can see कि cos square x आ जाएगा राइट हैंड साइड में, उसको sin square में लिख लेंगे. So sin x plus 1 is equals to 2 times of cos square x, which is 1 minus sin square x, so that we get a quadratic in sine. So this is 2 sin square x, then plus sin x, and 1 minus 2 is minus 1. This is equals to 0. So this will be, factorize कर सकते हैं इसको. So one root I can directly observe, that is sin x equals to minus 1. So plus 1 into 2 sin square x, sorry 2 sin x only, 2 sin x and minus 1 equal to 0. So this implies sin x is equals to minus 1 or sin x is equals to 1 by 2. So यहाँ से मुझे मिलेगा x is equals to n pi plus minus, और in fact इसको हम लिख सकते हैं 4n plus 3 pi by 2, that is the special case. और यहाँ से लिख सकते हैं x is equals to n pi plus minus 1 to the power of n into pi by 6. Now 4n plus 3 pi by 2 में सोल्यूशन नहीं आएंगे, बिकॉज अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन को देखोगे फिर से, तो दिस इज tan x and tan x at odd multiple of pi by 2 is not defined, so this is rejected. Fine. And the solution will be coming from here, that will be corresponding to x equals to n pi plus minus 1 to the power of n into pi by 6. I want number of roots in the interval 0 to 2 pi. So sin x is equals to half. In fact ये जनरल सोल्यूशन लिखने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, कि sin x equal to half के करस्पॉन्डिंग दो सोल्यूशन आएंगे in 0 to 2 pi, that is in first quadrant and second quadrant, and those two solutions are x is equals to pi by 6 and 5 pi by 6. So this is the answer. Next question. Question number 15. Question number 15 says the most general value of theta satisfying the equation sin theta is equals to sin alpha and cos theta is equals to cos alpha. Now हमें पता है कि sin theta equals to sin alpha and cos theta is equals to cos alpha दोनों satisfy simultaneously होना चाहिए, because it is written and का मतलब simultaneously it should be satisfying. So that value of theta we should understand कि it will be in the first quadrant, because second quadrant में cos नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव. सो आइदर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, बट वी कैन सी दैट कि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे n पाई प्लस अल्फा ले लेते हैं, दिस इज n पाई, इन फैक्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज 2n पाई एंड दिस इज 2n प्लस 1
तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं अल्फा की वैल्यू, सो देन इट वुड सेटिस्फाई, राइट, दैट इज 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा रखेंगे दोनों जगह, तो both the equations would be satisfied. So our most general possible value of theta will be equal to 2n pi plus alpha. This should be the answer. None of the other values are possible. 2n pi minus alpha में problem क्या होगा कि यहाँ पे this equation won't be satisfied, right? n pi minus alpha में ये satisfy नहीं होगा, and n pi plus alpha में again this won't be satisfied, as well as this. Next question, question number 16. General solution of tan phi theta is equals to cot 2 theta. So we can convert the cot in terms of tan. तो इसको हम लिख सकते हैं tan phi theta is equals to tan of tan pi by 2 minus theta is cot theta. So this is pi by 2 minus 2 theta. Now we can write the general solution for this, which would be equal to phi theta is equals to n pi plus alpha, which is pi by 2 minus 2 theta. Fine. So this is 7 theta is equals to n pi plus pi by 2. This gives me theta is equals to n pi by 7 plus pi by 14. So this is the answer. Question number 17. If tan of m theta is equals to tan of n theta, then the general value of theta will be. So we have tan of m theta is equals to tan of n theta. So general solution of this we can write as m theta is equals to n theta, not n theta, it should be n pi. So n pi की जगह we'll write k pi because n is already used, plus alpha. So alpha is n theta over here. So this is m minus n into theta is equals to k pi. So the value of theta is k pi upon m minus n. Now the question is saying कि the general value of theta will be in. तो ये general value of theta लिखी हमने यहाँ पे, and this theta value will be in AP because corresponding to k equal to 0, 1, 2, 3, whatever values we get, those will be in AP. That is 0, then pi upon m minus n, 2 pi upon m minus 1. So we can say that therefore value of theta will be in AP. You can see from here theta is equals to 0. मैं सिर्फ पॉजिटिव k के साथ लिखूंगा, नेगेटिव k के साथ भी लिख सकते हैं पीछे में, that would be same, pi upon m minus n, then 2 pi upon m minus n, then 3 pi upon m minus n, and so on. Next, question number 18. The number of values of x in the interval 0 to 3 pi satisfying the equation 2 times of sine square x plus 5 sin x minus 3 is equals to 0. So इसको हम factorize कर सकते हैं. This is a quadratic which we can factorize. So this is 2 sine square x. Again, I think I can factorize this directly. तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा because 2 into 3 is minus 6. Minus 6 को फैक्टराइज करना है. 5 should be the sum. 6 minus 1 are the factors. तो just a minute, minus 1 पे not 1 पे आ जाएगा, नहीं minus 1. ओके चलो लिख ही लिया. 2 sin square x plus 6 sin x minus sin x minus 3 equal to 0. So this is 2 sin x common into sin x plus 3 minus sin x plus 3 equal to 0. So this implies either sin x plus 3 will be 0 or 2 sin x minus 1 equal to 0.
सो यहाँ से मिलेगा हमें sin x इज इक्वल टू -3 और sin x is equals to 1/2. So -3 is not possible. This is to be rejected. So only possible value is sin x is equals to 1/2. So number of values in the interval. तो देख लो, the number of values possible will be 0 से 3 पाई का मतलब क्या हुआ कि 1 complete circle and then half circle. तो जब एक पूरा complete circle करेंगे तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू की बात चल रही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर से और एक बार जब 2 पाई से 3 पाई जाएंगे तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. सो टोटल हाउ मेनी वैल्यूज? टोटल 4 वैल्यूज. सो आंसर इज 4. सो आई वुड राइट डायरेक्टली 4 वैल्यूज. आंसर आप जनरल सोल्यूशन लिख के यू कैन राइट इट डाउन, दैट वे आल्सो यू कैन डू, बट डायरेक्टली समझ में आना चाहिए. देन 19, it says tan theta minus root 2 sec theta is equals to root 3, then the general value of theta. Okay, so सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम साइन और कॉस में. सो दिस इज साइन थीटा. चलो पहले क्वेश्चन ही लिख लिया मैंने. tan theta minus root 2 times of sec theta is equal to root 3. So this will imply sin theta minus root 2 is equals to root 3 cos theta. So this implies sin theta minus root 3 cos theta is equal to root 2. Fine. Now इसको डिवाइड कर देते हैं root 2 से, अंडर रूट a square plus b square से. So that is nothing but root 2. So this is sin theta divided by root 2 minus root 3/2 into cos theta. This is equal to 1. So this can be written as 1/√2 को pi/4 लिख सकते. No, just a minute. 2 से डिवाइड करना था, माय मिस्टेक. रूट 2 से नहीं, 2 से डिवाइड होना चाहिए था. रूट 2 से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, सो अंडर रूट 4 इज 2. सो दिस इज 2, दिस इज 2, और यहाँ आ जाएगा 1/√2. So now this can be written as sine of theta minus pi/6 is equal to pi/4, that is sine of pi/4. So now I can write using the general solution for sine theta equal to sine alpha, theta minus pi/6 is equals to n pi plus -1 to the power of n into pi/4. So we get theta is equals to n pi plus -1 to the power of n into pi/4 plus pi/6. That should be the answer. Next question. Question number 20. Question number 20 says if x lies from 0 to pi and cos x plus sin x is equals to 1/2, then tan x is equals to, fine. So again a sin x plus b cos x इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? रूट 2 से. सो दिस इज cos x बाय रूट 2 प्लस sin x बाय रूट 2. दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट 2. ओके, हमें निकालना है. अच्छा, वी आर सपोज टू फाइंड tan x. तो अगर हमें सिर्फ tan x की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्क्वायर दिस. इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं. सो स्क्वायरिंग विल गिव अस 1 प्लस sin 2x is equals to 1/4. आई होप यू अंडरस्टूड. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. 2 sin x cos x को मैंने लिख लिया sin 2x. सो दिस इज sin 2x. व्हाई डिड आई डू द स्क्वायरिंग? अभी समझ में आएगा. 1/4 minus 1. सो sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 tan x upon 1 plus tan square x. This is equals to -3/4. So this gives us 8 tan x is equals to -3 minus 3 tan square x. So this is 3 tan square x plus 8 tan x plus 3 is equal to 0.
So this is a quadratic in tan x. Let's solve this. That is tan x is equals to minus 8 plus minus under root of 64 minus 36, and that should be 28 divided by 2a, that is 6. So we get tan x is equal to minus 8 plus minus 7 into 4, तो ये हो जाएगा 2 root 7 by 6, 2 then 4 and 3. So tan x will be equal to minus 4 plus minus root 7 by 3. Now we have been given that x lies from 0 to pi. So accordingly one positive and one negative value, and if we see this, this is tan x is equals to minus 4 plus root 7 by 3, and tan x is equals to minus 4 minus root 7 by 3. And now we can check the options. Moving on to the next question, that is question number 21. Question number 21 says the general solution of sine square theta into sec theta plus root 3 tan theta equal to 0. So we can convert this into sine and cos. So we can write this as sine square theta plus root 3 sine theta divided by cos theta equal to 0. Now this cos theta will be multiplied to the right hand side, which will be 0. So this is sine theta common ले लेंगे numerator में से. So this is sine theta plus root 3 equal to 0. So this implies sine theta equals to 0 or sine theta is equals to minus root 3. Now this is not possible because sine theta always lies from minus 1 to 1. So therefore the answer is theta is equals to n pi, where n belongs to an integer. Question number 22. It says the number of solutions of the equation sec x upon 1 minus cos x is equals to 1 upon 1 minus cos x. So we have sec x upon 1 minus cos x is equals to 1 upon 1 minus cos x. Now यहाँ से अगर हम 1 माइनस cos x को डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे तो देन वी शुड नोट दैट कि cos x 1 नहीं हो सकता, देन ओनली वी कैन कैंसिल. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, जैसे मैंने बताया था कि यू डोंट कैंसिल इट आउट एंड यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन टेक दैट एज कॉमन. दैट इज सेम एज कैंसिलेशन, बट वंस वी कैंसिल उसको रूट्स मिस आउट हो जाता है, तो दैट वी शुड अंडरस्टैंड. सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस cos x एंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, सो दिस इज sec x minus 1 equal to 0. So we get 1 minus cos x is equals to 0, और यहाँ से भी वही आएगा, that is sec x is equals to 1, and same thing, that is cos x is equals to 1. Now cos x is equals to 1 is not possible. Why not possible? Because जो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन है उसमें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस cos x. अगर cos x 1 हो गया तो डिनोमिनेटर वोंट बी डिफाइंड, सो इक्वेशन वोंट बी ट्रू, राइट. इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगा. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हियर आर 0. This is not possible and this is also not possible. So therefore no solution. Then question number 23. General solution of tan theta equals tan phi theta is equals to cot 2 theta. I think this was the same question अभी किया था हमने. हाँ, question number 16. So I'll write same as question 16. Exactly copied question. Already done. Then question 24. The set of values of x for which tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 3x tan 2x equals to 1. तो I think अगर हमें समझ में आता है तो we can directly write the left hand side tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b लिखा हुआ है, and that is nothing but tan of a minus b. This is given to us as 1, so this can be written as tan a minus b equal to 1 को हम लिख सकते हैं tan pi by 4. So this is tan x is equals to
tan पाई बाय 4। सो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। नाउ अगर तुम ओरिजिनल इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो लेट्स से आई विल टॉक अबाउट n equal to 0 के corresponding I get x equals to pi by 4. Now corresponding to x equal to pi by 4, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x will be equal to pi by 2. So इसका मतलब tan pi by 2 आ जाएगा in the original question because tan 3x minus 2x लिखा हुआ है. So this term won't be defined. तो ये solution नहीं चलेगा. Then if I take n equals to 1 let's say, तो x आ जाएगा 5 pi by 4. Now corresponding to 5 pi by 4 again क्या प्रॉब्लम होगी, 2x को प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. सो अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ 5 by 2 आ जाएगा एंड tan वोंट बी डिफाइंड. सो इसका मतलब देयर इज देयरफॉर नो सॉल्यूशन. व्हाई नो सॉल्यूशन? अगेन बिकॉज the original question is not getting satisfied, original given equation is not satisfied for the values of x corresponding to this. Next question 25. It says if sine 2 theta is equals to cos 3 theta and theta is an acute angle, then sine theta is equal to, okay, so we have sine 2 theta is equals to cos 3 theta. So let's write the formulas for sine 2 theta, that is 2 sine theta into cos theta. Then cos 3 theta can be written as 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Now again I cannot cancel cos theta, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा. So 2 times of sin theta minus 4 times of cos square theta minus plus 3, right, into cos theta. This is equal to 0. Fine. So from here we get either this is equals to 0 or this is equals to 0. So we'll solve this to get the value of sin theta. So this is 2 sin theta minus 4 into 1 minus sin square theta plus 3 is equal to 0. So this implies 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 4 plus 3 is minus 1 equal to 0. Now I can solve this to get the value of sin theta. So sin theta will be equal to minus 2, that is minus b, plus minus b square minus 4 is c. So 4 and from here I would get 16, plus 16 आ जाएगा because there is a minus sign over here, and 2a that is 8. So sin theta is equals to minus 2 plus minus root 20 is 2 root 5 divided by 8. So 2 2 and ये आ जाएगा 4. So this implies theta is an acute angle. So since theta is an acute, we would get only one value, that is root 5 minus 1 upon 4. This should be the answer. Question number 26. The number of solutions of the equation. Okay. So the given equation is 2 plus 7 times of tan square theta is equals to 3.25 into sec square theta. Okay, so this will be written as 2 plus 7 times of tan square theta is equal to 3.25 को लिख सकते 325 by 100, and sec square theta can be written as 1 plus tan square theta. So we'll convert this into tan square theta. Now this is nothing but 25 4s are 25 1 and 7 आ जाएगा 3. Let's cross multiply this. इसको cross multiply करेंगे तो we would get 8 plus 28 tan square theta. This is equal to 13 plus 13 tan square theta. Now 28 minus 13 करेंगे तो this is 15. 15 tan square theta is equals to 13 minus 8 is 5. So this implies tan square theta is equal to 1 by 3. 1 by 3 को हम लिख सकते हैं 1 by root 3 का whole square, that is nothing but tan square pi by 6. So solution is theta is equals to n pi plus minus pi by
6. So what we want is number of solutions in 0 to 360 degree, that is principal solutions. So now this is very easy to understand कि अगर हमें tan square theta के corresponding solution चाहिए, तो अगर आपने क्लास में थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो I would get 4 values, 1 in each quadrant corresponding to this, because square है तो 1 each, therefore 4 solutions. The roots of the equation 1 minus cos theta is equals to sine theta into sine theta by 2. So 1 minus cos theta can be written as 2 times of sine square theta by 2. This is equals to sine theta को हम क्या लिख सकते हैं, 2 times of sine theta by 2 into cos theta by 2, and we have a sine theta by 2 already over here. Fine. So 2 and 2 we can get cancelled. So this is sine square theta by 2 is equal to cos theta by 2 into sine square theta by 2. So sine square theta by 2 can be taken common. Again, I am not cancelling it, and the reason you know, 1 minus cos theta by 2 is equals to 0. So this implies sine square theta by 2 is equals to 0, or I can say cos theta by 2 is equals to 1. So this implies theta by 2 is equals to n pi, or I can say from here that theta by 2 is equals to 2k pi, because the 1 आएगा on cos theta by 2 equals to 1 का solution हो जाएगा, theta by 2 is equals to 2k pi, that is even multiple of pi. So this implies theta is equals to 2n pi, or theta is equals to 4k pi. What we want is the roots of the equation. So the roots of the equation I can generalize and write it as theta is equals to some even multiple of pi. तो लिख लेते 2k pi. If I see the option, 2k pi is the answer. Don't get confused with this k, इसको चलो m कर दो. तो this is m pi, this is 4m. Question number 28. 28 says the number of solutions of sine 2x plus cos 4x is equals to 2. So we have sine 2x plus cos 4x equal to 2. One way is कि sin 2x को as it is रहने दिया, cos 4x को लिख लिया in terms of sin 2x, and that is nothing but 1 minus 2 times of sine square 2x equal to 2. So this implies 2 times of sine square 2x minus sin 2x and plus 1 equal to 0. So we can solve this as a quadratic, that is sin 2x is equals to minus b, that is 1, plus minus b square, that is 1, minus 4ac. So we can see that कि यहाँ पे d less than 0 आ रहा है, so therefore no solution. No solution. Why no solution? Because the discriminant of this quadratic is less than 0. D is less than 0. Question number 29. It says 2 cos square x plus 3 sin x minus 3 is equals to 0. X belongs to 0 to 180 degree, then x is equal to. So 2 cos square x plus 3 sin x minus 3 equal to 0. So हम यहाँ पे quadratic in sin x बना सकते हैं, because cos square can be written as 1 minus sin square. So this is 2 minus 2 sin square x plus 3 sin x minus 3 equal to 0. So this implies 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 equal to
0. We can factorize this. So one of the factors is 1 sine x minus 1 into the other factor would be 2 sine x minus 1 equal to 0. So we get sine x is equals to 1 or sine x is equals to 1 by 2. So in between 0 to 180 degree, what are the possible values? यहाँ से आ जाएगा x equals to 30 degree and corresponding to 30 degree, second quadrant में 150 degree. Oh shit, ये मैंने इधर वाले का सोल्यूशन लिख लिया. 1 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा पाई बाई 2 दैट इज 90 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, चलो डिग्रीज में लिखते बिकॉज ऑप्शंस आर इन डिग्रीज. सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड 150 डिग्री. देन क्वेश्चन नंबर 30. Question number 30 is the complete solution of the equation 7 cos square x plus sin x into cos x minus 3 equal to 0. So to solve this, what we can do is sin x and cos x are in combined. So sin x cos x combined में दिख रहा है हमें, तो we can divide this by cos square x. cos square x से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? I think we should get in terms of tan x. तो this is 7 plus sin x cos x divided by cos square. एक cos कैंसिल हो जाएगा and sin upon cos that will be tan x. And minus यहाँ पे आ जाएगा 3 times of sec square x. And sec square x can be written in terms of tan x. So this is 7 plus tan x minus 3 into 1 plus tan square x. This is equal to 0. So this implies 3 tan square x then minus tan x and minus 4 equal to 0, right? Just manipulation. अब this is quadratic in tan x, इसको solve कर लेते, इसके roots आ जाएंगे. So one root I can see is +1. No, not +1, it should be -1. तो tan x +1 एक फैक्टर हो जाएगा इसका. The other factor should be 3 tan x and -4 is equal to 0. So from here I get tan x is equals to -1 or tan x is equals to 4 by 3. Now tan x is equals to -1 लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा? tan x is equals to tan of -π/4 लिख ले इसको. नाउ यहाँ से आ जाएगा x is equals to 4/3 के करस्पॉन्डिंग वी डोंट नो दी x स्टैंडर्ड वैल्यू, सो दिस इज n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3. ठीक है, एंड यहाँ से आ जाएगा x is equals to n पाई प्लस अल्फा विच इज -π/4. नाउ अगर ऑप्शंस को देखोगे तो देयर इज नो सच ऑप्शन n पाई माइनस π/4. तो मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था दैट दिस इज हाउ वी राइट इन जनरल, बट -π/4 की जगह यहाँ पे मैंने -1 को tan ऑफ -π/4 लिखा. अगर मैंने tan 3π/4 भी लिखा दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो इसी को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4. वाई 3π/4? बिकॉज मैं यहाँ पे 3π/4 लिख सकता हूँ. ठीक है, तो दिस इज 3π/4 बिकॉज tan of 3π/4 is also -1. So ये आ जाएगा मेरा आंसर. This is question number 30. Then moving forward to question number 31. So question number 31 is tan theta plus tan 2 theta plus √3 times of tan 2 theta into tan 2 theta equals to √3. I think similar type of question हमने भी किया था. So here the observation is कि हम इसको tan of a plus b के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड 2 थीटा प्लस एक काम करते हैं कि चलो लिख ही लिया √3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3. नाउ इसको लिख लेते हैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा
and other terms I'm shifting to the right hand side. So root 3 common आ गया. So this is 1 minus tan theta into tan 2 theta. Now ये 1 minus tan theta and tan 2 theta इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. तो दिस इज tan theta plus tan 2 theta divided by 1 minus tan theta into tan 2 theta equals to root 3. Now this is tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, which is tan of A plus B, that is 3 theta, equal to root 3. Root 3 can be written as tan of pi by 3, that is 60 degree. So यहाँ से solution आ जाएगा 3 theta is equals to n pi plus alpha, which is pi by 3. So theta is equals to n pi by 3 plus pi by 9. तो इसको जनरलाइज फॉर्म में एलसीएम ले लिया 9. दिस इज 3n plus 1 into pi. तो दिस शुड बी द आंसर. So moving on to question number 32. 32 says if tan A and tan B are the roots of the equation, then sine square of A plus B. So equation given to us is x square minus 2x minus 1 equal to 0. Okay, now इसके roots क्या दे रखे tan A and tan B. तो we can write sum of the roots. Tan A plus tan B is equals to minus b by, तो minus of minus 2 is plus 2, and product of the roots is tan A into tan B, that is equals to c by A, which is minus 1. Okay, now if I write tan of A plus B, fine, so that will be equal to tan A plus tan B, which is 2, upon 1 minus tan A tan B, which is minus 1. So this is 2 by 2, which is 1. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं that A plus B will be equal to pi by 4, right? Not exactly pi by 4. I am writing the specific solution. तो जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं A plus B is equals to n pi plus pi by 4. Similar way I can write tan of A minus B. Tan of A minus B लिखूंगा तो that will be tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. Now tan A tan B की वैल्यू कितनी दे रखी है -1. So 1 minus 1 is 0. तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया. इसका मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड राइट हैंड साइड. तो इसका मतलब A minus B should be equal to pi by 2, that is odd multiple of pi by 2. तो if I consider it to be pi by 2, और यहाँ से अगर मैं एक सोल्यूशन कंसिडर करूँ A plus B is equals to pi by 4, I can solve this. In fact, I need only A plus B. Why I am finding this A minus B? इसकी ज़रूरत नहीं थी. Over thinking, not needed. यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है. So from here I can see that sine square of A plus B, that will be equal to sine square of pi by 4, and that is 1 by 2. So this is the answer. Then question number 33. Values of theta satisfying cosec theta plus 2 equal to 0. So we can convert this into sine theta. इसको लिख लिया मैंने. sine theta is equals to -1 by 2. Now corresponding to negative कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 values, one in third and one another is fourth. तो थर्ड क्वाड्रेंट के corresponding that value will be pi plus करेंगे तब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, एंड 1 by 2 के corresponding कितना एंगल होता है? 60 डिग्री, sorry 30 degree, that is pi by 6. And corresponding to the fourth quadrant, the value would be 2 pi minus pi by 6. So this is theta is equals to 7 pi by 6, and यहाँ से आ जाएगा 11 pi by 6. So अगर डिग्रीज में लिखेंगे तो this is
210 degree. This is 330 degree. Answer. Question number 34. The most general value of theta which will satisfy both the equation. Sine theta is equals to minus 1 by 2 and tan theta is equals to 1 by root 3. Right. Now sin theta negative होना चाहिए and tan theta should be positive. So think about this कि ये दोनों simultaneously कौन से quadrant में possible है. This is possible only in third quadrant first of all, right? Third quadrant में ऐसा possible होगा. Fine. Now अगर मैं sin theta equals to minus 1 by 2 की बात करूँ तो और tan theta equals to 1 by root 3 की बात करेंगे तो theta will be equal to how much, right? What I'm trying to do is कि ये देखना चाहता हूँ मैं कि ये एंगल कितना होगा. This is going to be theta equal to pi by 6, that is 30 degree. So this is pi by 6 and corresponding to this अगर मैं first value की बात करूँ तो that will be pi plus pi by 6. So हम देख सकते हैं कि this is odd multiple of pi by 2, sorry pi, and this is even multiple of pi by 2. So the most general possible value of theta will be equal to 2n plus 1 pi plus pi by 6. Fine, plus pi by 6 because in the third quadrant we want the solution. So third quadrant के corresponding 2n plus 1 pi से pi by 6 जाएंगे तो ये जो value होगी that will simultaneously satisfy. So this should be the answer and I think this is not there in the option, so none of these. Then question number 35. If sine of a plus b is equals to 1 and cos of a minus b is equals to root 3 by 2, then the smallest possible values of a and b. So sine of a plus b equal to 1. तो यहाँ से we can write a plus b is equals to pi by 2. हमें smallest possible value चाहिए तो generalize नहीं, मैं specific solution लिख रहा हूँ. General solution लिख सकते हो, but I have written one of those specific values. And cos of a minus b, this is equals to root 3 by 2. So corresponding to this I can write a minus b as equals to pi by, और डिग्रीज में लिखते हैं बिकॉज आंसर्स आर इन डिग्रीज. तो यहाँ जाएगा 90 डिग्री एंड हियर इट वुड बी रूट 3 by 2 है, दैट इज 30 डिग्री. नाउ ए एंड बी की वैल्यूज निकालनी है, एक बार ऐड कर दो तो ऐड करेंगे तो वी गेट 2a इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. सो a इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. a 60 डिग्री आ गया तो b कितना आ जाएगा 30 डिग्रीज. सो दिस इज द आंसर. Easy enough. Then question number 36. Cot theta is equals to sine 2 theta if theta is equals to, so we have cot theta is equals to sine 2 theta. Okay, तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली देख सकते हो from the given options and you would get the answer. दूसरा तरीका अगर इसको प्रोसीजरली सॉल्व करना है तो तुम इसको लिख लो 1 अपॉन tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो यू गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. सो ये आंसर आ जाएगा. देख सकते हो तुम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड 90 डिग्री दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 37. 37 says if cos a into sine of a minus pi by 6 is maximum, then the value of a is equal to. Okay. So we have cos of a
into sine of a minus pi by 6. So this is maximum and we are supposed to tell the value of a. तो what we can do is हम इसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला के साथ यूटिलाइज होगा, दैट इज 2 sin a cos b. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ a plus b, that will be 2a minus pi by 6 and then minus, not minus, it should be plus sine of a minus b, that would be a minus pi by 6 minus a, so यहाँ पे आ जाएगा minus pi by 6. Now this implies this is 1 by 2 into sine of 2a minus pi by 6. Now sine of minus pi by 6, that is minus of 1 by 2. Fine. So now we can see that कि ये maximize होना है, तो for this expression to be maximum क्या होगा, साइन मैक्सिमाइज हो जाए एंड साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज 1. फाइन. सो व्हेन साइन ऑफ 2a minus pi by 6 मैक्सिमम वैल्यू 1 पे रीच करेगा, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी मैक्सिमम. सो वी कैन से देयरफॉर साइन ऑफ 2a minus pi by 6, this should be equal to 1 for maximum value of above expression. And sine will be equal to 1 when the angle is 90 degrees. So 2a minus pi by 6 should be equal to pi by 2. तो यहाँ से आ जाएगा 2a is equal to pi by 2 plus pi by 6. That is 2a is equal to 6, 2 pi by 3 in fact. So directly लिख लिया मैंने 2 pi by 3. Then this 2 and 2 gets cancelled. So we get the required value of a is pi by 3. Then question number 38. It says if cos 40 degree is equals to x and cos theta is equals to 1 minus 2 times of x square, then the possible value of theta lying between 0 and 360 degree. So substitute कर देते हैं यहाँ पे x को, that is 1 minus 2 times of cos square 40 degree. Now यहाँ से अगर minus sign common ले लेंगे तो we can write this as 2 cos square 40 degree minus 1, and 2 cos square 40 degree is nothing but cos of 80 degrees, so minus of cos 80 degree. ठीक है. Now this can be written as cos theta is equal to cos of 180 plus theta कितना होता है, minus cos theta, तो इसको 180 plus 80 लिख सकते हैं, और this can also be written as cos theta is equals to 180, sorry, cos of 180 minus 80. So cos of 180 minus 80. So this gives me that theta is either equal to 180 plus 280 कितना होगा, 260 degrees, or theta is equals to 100 degrees. So this is the answer. Next question. Question number 39. 39 says the general solution of sin x minus cos x is equal to root 2, equal to root 2 for any integer n. So again a sin x plus b cos x टाइप वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट रूट 2. तो दिस विल बी sin x, इसी रूट 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, माइनस cos x, यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, यहाँ रूट 2, दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज sin a cos b माइनस cos a sin b, तो इसको लिख लेते हैं sin ऑफ a माइनस b. फाइन. चलो इसको अगर cos में लिखेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज ऑप्शंस को देखोगे तो
कॉस में दिख रहा है, नो इश्यूज। सो दिस इज इनफैक्ट इसको साइन में लिखा तो भी नो प्रॉब्लम, सो दिस वी कैन राइट साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इज x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू, so this is 4n plus 1 pi by 2, right? Sin theta is equals to 1 का जनरल सोल्यूशन है, theta is equals to 4n plus 1 pi by 2. So from here I get x is equals to 2n pi plus pi by 2 plus pi by 4. So this implies x is equals to 2n pi plus 3 pi by 4. So this is the answer. Question number 40. 40 says if n is any integer, the general solution of the equation cos x minus sin x is equals to 1 by root 2. So again a cos x plus b sin x टाइप इक्वेशन है, तो इसको हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय रूट 2. सो cos x बाय रूट 2 माइनस sin x अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, राइट? रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने. So this is nothing but cos of x minus plus pi by 4 is equals to 1 by 2 को क्या लिख सकते हैं, cos of pi by 3. So this gives me x plus pi by 4 is equal to 2n pi plus minus pi by 3, that is x plus pi by 4 is equal to, चलो एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ तो लिख लेते हैं, that is x is equals to 2n pi plus pi by 3 minus pi by 4, और x is equals to 2n pi minus pi by 3 minus pi by 4. So this is equals to 2n pi plus pi by 12, or x is equals to 2n pi minus 7 pi by 12. This is the answer. Then question number 41. 41 says the equation sin x plus sin y plus sin z is equal to minus 3 sin x plus sin y plus sin z is equals to minus 3. X belongs to 0 to 2 pi, y belongs to 0 to 2 pi, and z also belongs to 0 to 2 pi. If we observe this equation, तो हमें दिख रहा है दैट साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल टू माइनस 3 लिखा हुआ है. अब ये माइनस 3 के इक्वल तभी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड में ऑल दीज रीच देयर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, दैट इज -1. अगर ये तीनों -1 होंगे तभी ये -3 के इक्वल हो सकता है. देयरफॉर फॉर दिस इक्वेशन टू बी ट्रू, साइन एक्स should be equal to sin y should be equal to sin z should be equal to -1. So this is the only possible solution. Therefore, one solution, only one possible solution for the above equation. Question number 42. The number of solution of the equation 2 times of cos into e to the power of x is equal to 5 to the power of x plus 5 to the power of minus x. Now here इसको कैसे सोचेंगे? See, this is like अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो on the LHS I can see that the maximum possible value is LHS is always less than equal to 2. ठीक है? And if I see the RHS is always greater than equal to 2. Now ये तुम सोच रहे होंगे कि 2 से बड़ा ही क्यों होगा? Apply AMGM. These are two positive numbers,
सो AMGM अप्लाई करूंगा तो आई कैन राइट 5 to the power of x plus 5 to the power of minus x. Applying AMGM on these two numbers divided by 2 is greater than equal to root 5 to the power of x into 5 to the power of minus x, that will be under root 1, which is 1. तो दिख रहा है तुम्हें that 5 to the power of x plus 5 to the power of minus x is greater than equal to 2. एक्सप्लेनेशन था, ठीक है. तो LHS 2 से छोटा है, 2 के बराबर या 2 से छोटा, एंड RHS इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2. तो सोल्यूशन तो पॉसिबल होगा तब जब ये दोनों 2 के बराबर हो जाए, ठीक है. तो मैंने बोल दिया कि देयरफॉर सोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज इक्वल टू 2. तो अगर मैं RHS को 2 के इक्वल करूं तो कब पॉसिबल होगा? RHS इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 0, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो. अब x इक्वल टू 0 पे LHS क्या होगा? x इक्वल टू 0 पे LHS क्या होगा? देख लो, LHS विल बी इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर ऑफ 0 इज 1, ठीक है. तो क्या 2 cos 1 इक्वल टू 2 पॉसिबल है? नो. तो जो इक्वलिटी इक्वल टू 2 पे सॉल्यूशन एक हो सकता था, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज 2 cos 1 is not equal to 2. So therefore no solution. Then 43 says the equation sin x plus cos x equals to 2 has, so we have sin x plus cos x equal to 2. again sin x plus cos x equal to 2 लिखा हुआ है, तो तुम इसको वही a sin x plus b cos x फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 2 कर सकते हो. आई वुड राइट डायरेक्टली दिस टाइम दैट इज साइन ऑफ, ये आ जाएगा x प्लस पाई बाय 4. जब मैं इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो जो मल्टीप्लाई किया हुआ रूट 2 है, अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू रूट 2. नाउ साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ सम एंगल इक्वल टू रूट 2 पॉसिबल है. दिस इज ग्रेटर देन 1, रूट 2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर नो सॉल्यूशन. साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. नो सॉल्यूशन. सब नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन. क्वेश्चन 44 says the equation root 3 sin x plus cos x is equals to 4 has, again a sin x plus b cos x फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो दिस विल बी रूट 3 बाय 2 sin x प्लस, दिख रहा है नो सोल्यूशन आएगा, cos x बाय 2 is equal to 2. So this can be written as sine of x plus pi by 6 equal to 2. So again sine of some angle equal to 2, not possible, है ना, 1 हो सकता है मैक्सिमम, therefore again no solution. Then last question 45. It says the equation sin x into cos x equal to 2 has one solution, two solution, infinite, no solution. Again no solution. कैसे no solution? देखो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो दिस इज 2 sin x cos x is equals to 4. 2 sin x cos x can be written as sin 2x. So sin 2x is equals to 4. Now sin 2x equal to 4, sin of some angle equal to 4. Again पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1 हो सकता है. So therefore no solution again. ठीक है. Every time I am saying that sin x is always lying from -1 to 1. That is why there is no solution. Hope you understood all the solutions. Thank you.